Okay, we are doing salicylates and acetaminophen poisoning. आज 4 poisons हैं. I will be quick. If you have any questions, please ask me on WhatsApp. तो मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगी. ठीक है? We have to do salicylates, acetaminophen, digitalis and cyanide. 4 करने हैं. चारों MCQs में आते हैं. Important हैं. Let's begin with aspirin poisoning. Salicylates जो है या aspirin वो एक ही चीज़ है. और सैलिसिलेट या एस्पिरिन का जो ओवरडोज है वो पहले बहुत कॉमन होता था इन द पास्ट. आजकल पैरासीटामोल का ज़्यादा कॉमन हो सकता है कि पैरासीटामोल का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाए एज कम्पेयर टू सैलिसिलेट, बट एनीवे हमें तो पढ़ना है. तो इंटेंशनल सैलिसिलेट ओवरडोज जो है वो एडोलेसेंट और यंग एडल्ट्स में होती है. घर में कॉमनली अवेलेबल है दोनों, एस्पिरिन भी और पैरासीटामोल भी, इसलिए इनका ओवरडोज कॉमन है. चिल्ड्रन के अंदर इसका ओवरडोज एक्सीडेंटल होता है और एल्डरली के अंदर थेरेप्यूटिक मिसएडवेंचर्स, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए या तो पैरासीटामोल या एस्पिरिन को समझते हैं कि ये पेन का, पायरेक्सिया और हर किसी चीज़ का हल है. सो दैट इज़ वाई इसका जो ओवरडोज है वो कॉमन है. अच्छा, अगर इसकी ट्रीटमेंट के अंदर डिले हो जाएगा तो इट इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज मॉर्टालिटी. ठीक है, और पैरासीटामोल के साथ भी यही होता है. आप इसका ट्रीटमेंट अगर डिले करेंगे या फिर आपने किसी को घर भेज दिया विदाउट एडमिटिंग देम एंड ऑब्जर्विंग देम, तो फिर मॉर्टालिटी रेट हो सकता है कि ज़्यादा हो. So you never send home patients of salicylate or paracetamol poisoning without admitting them and observing them. ठीक है, अगर अच्छी मैनेजमेंट होगी तो मोर्टालिटी रेट्स लो होते हैं और 5% of toxic patients die from cardiovascular and central nervous system complications. ठीक है, therapeutic uses we all know analgesic है, anti-inflammatory है, antipyretic है, antiplatelet है. अच्छा, ये इसका एक चार्ट है जिससे द मोड ऑफ एक्शन पता चल रहा है कि इट इज गोइंग टू कॉज अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ठीक है, और जब अनकपलिंग होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है. ओनली हीट एनर्जी इज रिलीज बट एटीपी इज नॉट बीइंग फॉर्म्ड. ठीक है, फिर बॉडी इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज करती है और डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हो जाते हैं, ग्लाइकोजन रिपीट हो जाता है. The main mode of action is uncoupling of oxidative phosphorylation. ठीक है, जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अनकपल होगी पूरी बॉडी में, हर जगह न्यूरोनल एक्टिविटी यहाँ पर होगी, हर ऑर्गन की एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब होगी एंड दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन all the signs and symptoms जब हम आगे करेंगे. दूसरा, it is a direct stimulator of the medullary center of the brain. तो रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है. ये आपने रीनल फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि सैलिसिलिक एसिड जब बढ़ता है तो इट इज गोइंग टू कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस. ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में इंक्रीज बाइकार्ब एक्सक्रीशन होगी. रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस ऐसे होगा कि बहुत ज़्यादा जब स्टिमुलेशन होती है रेस्पिरेटरी सेंटर की, हाइपरवेंटिलेशन होगी. हाइपरवेंटिलेशन के साथ इट इज़ ऑल्सो एन ओटोटॉक्सिक ड्रग, तो ये टोनाइटिस भी कराएगा, डेफनेस भी कराएगा, फिर न्यूरोनल एक्टिविटी को इम्पेयर करेगा विच इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन जो है वो CNS डिसफंक्शन, जिसमें डिलीरियम है, हाइलुसिनेशंस है और एजुकेशन है, ये सब होगा. ठीक है, तो ये इसका एक जनरलाइज मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस के सिम्टम्स और साइंस हैं. हाइपोथर्मिया कराता है क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, पायरेक्सिया, डिहाइड्रेशन. ठीक है, बिकॉज गोइंग टू कॉज वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक इरिटेशन, also GI losses by diarrhea, respiratory alkalosis, metabolic acidosis, हाइपोकैलिमिया, हाइपोनेट्रीमिया. जब रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस होता है तो हाइपोकैलिमिया होता है. ठीक है, सो अगर आप सिर्फ रेस्पिरेटरी अल्कोहोलिसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ओटोटॉक्सिसिटी याद रखें तो आपको बाकी के सिम्टम्स याद रहेंगे. ठीक है, जीआई सिम्टम्स में नॉजिया, वॉमिटिंग है, हेमेटोमेसिस है, मेलाना है बिकॉज इट्स इरोडिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक एंड द गट. ठीक है, तो जीआई में फिर आपके पास नॉजिया, वॉमिटिंग, हेमेटोमेसिस, मेलाना हो गया. रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हाइपरवेंटिलेशन, हाइपरएपनिया, टिकेपनिया, एसिफोन ब्रेथ होगा ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कीटोन्स. ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, सैलिसिलिक एसिड का बिल्डअप हो रहा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रही, पायरुवेट बिल्डअप होगा, कीटोन बॉडीज बिल्डअप होंगी
और लैक्टिक एसिड बिल्डअप होगा, एसीटोन ब्रेथ होगा, हाइपोक्सिया होगा, acute lung injury होगी, PST रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हो गए। फिर सीरियस डिस्टर्बेंसेस में टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, डिसरिथमियास, asystole, PVC3, ventricular contractions. Okay. CNS disturbances में tinnitus is very important, hearing loss, tremors, seizures, confusion, hallucinations, encephalopathy, coma and death. ठीक है, तो ये ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, अच्छा फिर ये तो सबको पता है कि ब्लड ब्लड डिस्फंक्शन का आता है, इट्स ब्लड थिनर। तो ये जो कोagulation का पूरा साइकिल है उसको डिस्टर्ब करती है। इनहिबिशन ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स, इनहिबिशन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन E2 को थ्रोम्बिन लेवल्स को डिक्रीज करेगी, तो हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया होगा। फिर ये रैप्डोमायोलाइसिस भी करवा सकती है, दैट इज ड्यू टू डिसिपेशन ऑफ हीट एंड एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव phosphorylation. So everything is happening because of the uncoupling of oxidative phosphorylation. So rhabdomyolysis क्या होता है? It is when the muscles एक तरह से मसल्स घुल रहे होते हैं और उनके फाइबर्स जो है वो निकल के ब्लड स्ट्रीम में जा रहे होते हैं। ठीक है, it is going to it's a condition which breaks down the overworked muscles and releases the fibers into the bloodstream. ठीक है, क्योंकि एटीपी है नहीं और बहुत सारी हीट एनर्जी है और due to the uncoupling of oxidative phosphorylation there is accumulation of heat and other forms of energy but not ATP which is going to break down the muscles और फिर वो मसल फाइबर्स जो हैं वो टूट के और ब्लड स्ट्रीम में आना शुरू हो जाते हैं और फिर आपके आर्म्स जो हैं यू आर अनेबल टू मूव देम। मायोलाइसिस ये भी एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में होता है, याद रखिएगा। Fatal dose, a small dose may prove fatal due to idiosyncrasy. हर बंदे में अलग अलग इसका रिस्पॉन्स होता है। मिनिमम फेटल डोज इज 5 to 10 grams, ठीक है, नॉट मिलीग्राम्स, ग्राम्स, which means 5,000 to 10,000 milligrams. अच्छा, fatal period varies from a few minutes to several hours. डायग्नोसिस जैसे सारे पॉइजन का करते हैं इसमें भी ऐसे ही करेंगे। यूरिन एनालिसिस, ब्लड इलेक्ट्रोलाइट वर्कअप होगा। ठीक है, यूरिन के अंदर आपको कीटोन्स मिलेंगे, ग्लूकोज मिलेगा। एस्पिरिन इन यूरिन कैन बी डिटेक्टेड बाय एडिशन ऑफ few drops of 10% ferric chloride और एक जब फेरिक क्लोराइड डलता है तो यूरिन का कलर वायलेट हो जाता है, जिसका मतलब है कि एस्पिरिन की ओवरडोज है। अच्छा, ब्लड के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है, ऑल्टर्ड ग्लूकोज लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, यूजुअली हाइपोग्लाइसीमिया देखने में आता है because I explained in the beginning, वो सारा देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स में हाइपोकैलेमिया होगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया होगा, रेज्ड यूरिया होगा। अच्छा, लो सीरम लेवल्स अर्ली आफ्टर acute ingestion do not prove toxicity. So I told you कि अगर इनिशियली उसकी बॉडी के अंदर सैलिसिलेट लेवल्स लो हैं, यू आर नॉट गोइंग टू सेंड द पेशेंट होम। ठीक है, हर 2 घंटे के बाद आपने उसके सैलिसिलेट लेवल्स ब्लड में चेक करने हैं। लेवल्स शुड बी नोटेड एवरी 2 आवर्स। अगर कम आ रहा है लेवल, देन यू हैव टू अगेन चेक आफ्टर 2 आवर्स, क्योंकि कभी-कभी इनिशियली रेज सैलिसिलेट लेवल्स नहीं आएंगे। कभी-कभी वो कोटेड होती हैं टैबलेट्स, कभी नहीं होती हैं, या कभी वैसे ही ब्लड स्ट्रीम में आने के लिए देर लग रही होती है। तो पीक सीरम लेवल्स जो है वो 6 आवर्स के बाद आते हैं। सो यू हैव टू एडमिट देम, ऑब्जर्व देम एंड यू कैन नॉट सेंड देम होम अगर उनके सैलिसिलेट लेवल्स लो हैं। A delayed increase may be seen in patients who have ingested enteric-coated or sustained release products due to delayed absorption or in patients with worsening acidosis. ठीक है, तो you have to observe. Acute toxicity levels हैं 31 to 100 milligram per deciliter और chronic toxicity levels हैं 30 to 40 milligram per deciliter। ये blood levels की बात हो रही है। ठीक है, these are different from fatal doses। तो अगर ये लेवल्स आए ब्लड रिपोर्ट के अंदर, सैलिसिलेट लेवल्स ऑफ ब्लड अगर ये हो तो फिर आपने उसको एडमिट रखना है। इससे कम भी हो तो एडमिट रखना है और वेट करना है और ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अच्छा, ट्रीटमेंट वही है। गैस्ट्रिक लवाज is carried out with warm water and some quantity of 5% sodium bicarb, forced alkaline diuresis, peritoneal dialysis, hemodialysis, exchange transfusion, restoration of electrolyte balance,
स्पेशली विद पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम लॉस हो रहा है। IV solutions to counter dehydration, vitamin K because of abnormal bleeding, blood or platelet transfusions. ठीक है। पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस में there may be rashes on the skin, उसका जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होगा वो इरोडेड होगा, उसके बाद कंजेस्टेड होगा, पर्टिकुलर हेमरेजेस आपको बॉडी में मिल सकते हैं क्योंकि हाइपोक्रोमिलिया है, pulmonary edema is common। अच्छा, पॉइजनिंग इज जनरली एक्सीडेंटल फ्रॉम इडियोसिंक्रेसी और ओवरडोसेज, ये इसका मेडिकल लीगल एस्पेक्ट है, कम ही ये सुइसाइडल होता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, बच्चों में एस्पिरिन ओवरडोज कैन कॉज राइस सिंड्रोम और दिस इज acute hepatic failure and encephalopathy, स्पेशली जो बच्चे 15 साल से कम हैं एंड दे रिसेंटली हैड इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स, उनको अगर एस्पिरिन दे दी तो फिर दे कैन डेवलप राइस सिंड्रोम। इसके 6 स्टेजेस होते हैं। आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद यू, आप इन 6 स्टेजेस को देख लीजिएगा, लेकिन ये टॉक्सिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट इज पैरासिटामोल और एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग। ठीक है। पैरासिटामोल मेटाबोलाइट है फेनासिटन का। इट इज नाउ बिकमिंग अ मोर कॉमन कॉज ऑफ ओवरडोसेज बिकॉज ऑफ इट्स वाइड स्प्रेड यूज इन प्लेस ऑफ एस्पिरिन। ठीक है। तो अब इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो ज़्यादा कॉमन होती है। इसमें ये हो रहा है कि जो है इसका नॉर्मली थेरेप्यूटिक यूज ये है कि जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम है लिवर के अंदर, वो बनाता है एन एसिटाइल बेंजोक्विनोन अमाइन। ठीक है। और स्मॉल डोसेज में बनाता है व्हेन इट इज यूज्ड फॉर थेरेप्यूटिक पर्पसेस। लेकिन जब इसकी ओवरडोज होती है तो ये नैपकी जो है एन-एसिटाइल बेंजोक्विनोन अमाइन बहुत हाई डोजेज में बन जाता है और इसकी कॉन्जुगेशन नहीं हो पाती ग्लूटाथायोन से, और फिर इसके लेवल्स जब बढ़ जाते हैं तो जो हेपेटिक मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उसके साथ ये कंबाइन करके हेपेटोसेलुलर डैमेज कराता है। सो एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी causes hepatocellular damage, just remember that। और क्योंकि जो सारा hepatic cytochrome P450 enzyme system है gets overwhelmed and the conjugation with glutathione cannot take place। ठीक है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। इस चार्ट में यही बात लिखी हुई है, ऊपर थेरेप्यूटिक डोज के साथ, नीचे ओवरडोज के साथ क्या होता है। थेरेप्यूटिक डोज में कॉन्जुगेशन हो जाती है इस मॉलिक्यूल की और ओवरडोज के अंदर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाती है इसकी। ठीक है। अच्छा, पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी के 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 इज लेस देन 24 आवर्स, स्टेज 2 इज between 24 to 72 hours, stage 3 is 70 to 96 hours, और stage 4 is the stage of recovery। stage 1 एक नॉन स्पेसिफिक स्टेज होती है, उसके अंदर कभी सिम्टम्स होते हैं कभी नहीं होते, लैब स्टडीज आर मोस्टली नॉर्मल। इन स्टेज 2 जो है वो आपके जो लिवर एंजाइम्स और बाकी एंजाइम्स स्टार्ट रेजिंग, पैनक्रियाटाइटिस होता है। स्टेज 3 के अंदर सीवियर हेपेटाइटिस और डेथ अगर होनी हो तो स्टेज 3 में हो जाती है, वरना आपकी स्टेज 4 में रिकवरी होती है और ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी है ये आपने 4 फेजेस याद रखने हैं। फेज 1 इज 30 minutes to 4 hours। इसके अंदर एनोरेक्सिया, नाउजिया, पैलर, वॉमिटिंग, डायफोरेसिस होगा, माइलेज में भी प्रेजेंट, सिम्टम्स आर डिसेप्टिवली माइल्ड एंड पेशेंट इज फुली कॉन्शियस। ठीक है। तो इस स्टेज पे भी आपने उसको घर नहीं भेजना है, यू हैव टू एडमिट देम। अगर आपको बोलता है कि इसका पैरासिटामोल ओवरडोज है so you have to admit them and you have to observe them because the symptoms can be misleading। Phase 2 के अंदर उसको which is between 24 to 72 hours उसको जो है the liver starts undergoing damage, लेकिन relatively the patient is pain free और उसको हल्का हल्का राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में शायद टेंडरनेस या राइट अपर कॉर्नर पेन शुरू होता है। Then there's anorexia, malaise, elevated liver enzymes, prolonged prothrombin time, deteriorated renal function, tachycardia, and hypertension। ठीक है, ये phase 2 है। Phase 3 is the stage of hepatic failure, which is seen after 3 to 5 days. GI hemorrhage है, cerebral edema, renal tubular necrosis, cardiomyopathy, coagulation defects, hepatic necrosis। उसके जो ALT लेवल्स हैं 2000 10,000 माइक्रोन पर लीटर चले जाते हैं और डेथ ड्यू टू हेपेटिक फेलियर। सो फेज 3 जो है वो सबसे ज़्यादा तबाहकुन है और फेज 4 में कंप्लीट रेजोल्यूशन और डेथ हो जाती है। पेशेंट्स हु सर्वाइव फेज 3 हैव अ कंप्लीट रेजोल्यूशन ऑफ सिम्पटम्स। जो स्टेज 3 से निकल आएगा और फेज 4 में चला जाएगा
उसकी कंप्लीट रेजोल्यूशन ऑफ सिम्टम्स हो सकती है और वो ऑर्गन फेलियर से बच सकता है। तो दिस इज नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन डेथ, ठीक है। फेटल डोज इज इंजेक्शन ऑफ 20 टैबलेट्स ईच ऑफ 500 मिलीग्राम, ठीक है। सो 10,000 मिलीग्राम जो है तो फेटल डोज हो गया इसका। अच्छा, उसके बाद पैरासीटामोल इज यूजुअली फेटल विद इन 3 to 5 days। तो इमीडिएट डेथ इसमें नहीं होती है। All patients who have taken an overdose or suspected of having done so should be admitted, ठीक है। मैनेजमेंट इसलिए कि आप उनको एडमिट कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, बिकॉज द हिस्ट्री एंड क्लिनिकल स्टेट कैन बी मिसलीडिंग। उसके बाद आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर उसको अपेरेंटली 12 घंटों तक में अपीयर कम्प्लीटली वेल, और एक्यूट हेपेटिक फेलियर उसको 5 दिन के बाद हो सकता है, ठीक है। तो उसको ऑब्जर्व करना है। Gastric lavage should be carried out if the patient is admitted within 1 or 2 hours, और आप उसको वॉमिटिंग इंड्यूस कर सकते हैं। और वॉमिटिंग आप अगर इंड्यूस कर रहे हैं तो फिर आपके साथ उसको फ्लूइड भी देने हैं, लेकिन कंट्रोल करके देने हैं क्योंकि पैरासीटामोल खुद ही फ्लूइड रिटेंशन करा रही होती है, ठीक है। So you have to be careful with that. Complications of severe hepatic necrosis are treated as follows: hypoglycemia के लिए dextrose दे दें, metabolic acidosis के लिए bicarbonate दे दें, generalized bleeding के लिए विटामिन के दे दें, प्लेटलेट्स दे सकते हैं, ठीक है। ओरल मेथियोनिन 10 grams or 12 hours in 4 doses prevents hepatic damage. So hepatic damage के लिए मेथियोनिन दे दें, and hemodialysis for acute renal failure. So ये सिम्टोमेटिक है, जो जो चीज़ हो रही है उसके हिसाब से आप उसको ट्रीट करेंगे। Moderate to severe poisoning में आप N-acetylcysteine liquid mix should be given orally. It is most effective when given within 16 to 24 hours of overdosage for preventing hepatic damage. Initial dose is 140 milligrams per kg, followed by 70 milligrams per kg. Try to remember the doses as well, कि किस डोज में आपने उसको लगाना है, ठीक है। This may cause side effects like nausea, vomiting, and drowsiness for 48 hours. But this treatment is effective for controlling liver damage. तो मीथियोनिन लिवर डैमेज के लिए दे रहे थे हम, और उसके बाद हम इनको मिक्स दे रहे हैं, ठीक है, for liver damage. और in patients with evidence or suspicion of cerebral edema, IV administration of mannitol and hypertonic glucose is used. तो cerebral edema के लिए हमेशा mannitol ही देते हैं, ठीक है। Post-mortem appearance remains paracetamol tablets may be found in the stomach. And the typical findings are skin rashes, jaundice, petechial hemorrhages, GI bleeding. So post-mortem appearance इसकी और aspirin की तकरीबन एक जैसी ही, बस इसमें hepatic necrosis ज़्यादा होगा। Medical legal aspect में poisoning is generally accidental, जैसे कि salicylate में भी, इसमें भी poisonings accidental due to overdosage and indiscriminate use as an analgesic। अगर आप बहुत ज़्यादा पेन के लिए ये खाते हैं तो फिर इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। पेनफुल इंटरवल बिटवीन इंजेक्शन एंड डेथ, सो इट्स नॉट अ सूटेबल स्विचेबल ड्रग। इसके अंदर काफ़ी दिन लगते हैं डेथ होने में, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट और अच्छी स्विचेबल ड्रग नहीं है। इट इज़ मोर कॉमन इन चिल्ड्रन विद लो बॉडी टेम्परेचर, ओलिगुरिया एंड हेपेटोमेगाली। अच्छा, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ पैरासीटामोल फॉर पेन रिलीफ में डेवलप टॉक्सिक हेपेटाइटिस, स्पेशली इन पेशेंट्स टेकिंग isoniazid between barbiturates and AIDS. Next is cyanide. Cyanide hydrocyanic acid or cyanide. It is also known as cyanogen or prussic acid. ये colorless gas है, ये gas form में भी हो सकता है, liquid form में भी हो सकता है, ठीक है, solid form में भी हो सकता है। So अगर तो basically जो HCl अगर gas होगी तो उसका जो odor है that resembles that of कड़वे बादाम। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर सिनेरियो आए और इसके अंदर बिटर आमंड स्मेल लिखा हो तो यू हैव टू थिंक ऑफ साइनाइड, ठीक है। तो साइनोजन और प्रूसिक एसिड एक कलरलेस गैस होती है, इसका बहुत पेनिट्रेटिंग ओडर होता है रिसेंबलिंग दैट ऑफ बिटर आमंड्स। लिक्विड हाइड्रोसाइनिक एसिड जो है वो हाईली वॉलेटाइल है और वो भी एकदम कलरलेस गैस बन जाएगी। बट अगर लिक्विड में किसी ने ले लिया है, गैस में किसी ने ले लिया है, तो इसकी बहुत इमीडिएटली death होगी। Hydrocyanic acid combines with bases of several metals and strong alkalis to form cyanides, ठीक है। Cyanides are white powders. They are used in photography, electroplating, metallurgy, tanning, fumigation of ships, agriculture to prevent plant decay. Okay,
ये सारी चीज़ों में इनके यूजेस होते हैं. Mode of action is hydrocyanic acid is readily absorbed from the mucous membrane, which is very toxic when inhaled. इसको mucous membranes body की फौरन से absorb कर लेती हैं. ये बहुत toxic है. Within seconds इसके अंदर इंसान की death हो सकती है. The protoplasmic poison is going to destroy the protoplasm, it's going to inhibit the cytochrome oxidase system. ठीक है, cytochrome oxidase system ही जब आपका inhibit हो जाएगा फिर कोई ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन नहीं होगी, सेल डेथ हो जाएगी. सो डेथ इज ड्यू टू साइटोटॉक्सिक और हिस्टोटॉक्सिक नॉक्सिया. Although the blood may contain normal oxygen content, ठीक है, because your cytochrome oxidase system has been demolished, तो अब ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन हो ही नहीं सकती. It inhibits other enzyme systems as well. Cyanides show in addition a corrosive effect on the mucous membrane. ठीक है. The rapidity with which the cyanides cause death will depend on the amount of hydrochloric acid present. यानी कि जितनी टाइम लगेगा डेथ के अंदर, that depends कि आपकी बॉडी के जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वो कितना HCl रिलीज कर रहा है into the stomach. ठीक है. So the amount of hydrochloric acid present at the time of ingestion or inhalation will decide कि कितना टाइम लगेगा डेथ होने में. ठीक है. अगर आपने इसका कोई सॉल्ट लिया है तो भी the amount of HCl present in the stomach will decide. ठीक है, क्योंकि उससे फिर हाइड्रोजन साइनाइड बन जाता है. The hydrogen combines with cyanide and hydrogen cyanide produces जाती है, which is directly absorbed by gastric mucosa or that causes death. So inhalation of gas will result in instantaneous death. When a large dose of liquid hydrogen cyanide acid is swallowed, symptoms usually occur at once, but in some cases there is an interval of about 1 minute. तो गैस किसी ने अगर इनहेल कर ली तो फौरन इंस्टेंटेनियस डेथ होगी. लिक्विड एसिड में उसको थोड़ा एक आध मिनट मिल जाएगा. ठीक है, बट आई टोल्ड यू कि लिक्विड में हाइड्रोजन साइनाइड बहुत वोलेटाइल होता है, वो फौरन से म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेगा और फौरन से अब्सॉर्ब होगा. लेकिन हो सकता है 1 मिनट वो बच जाए. If death is delayed for a few minutes, agonizing dyspnea, convulsions, and dilated pupils may be noted. So it's a very agonizing death with cyanide. Okay? With a small dose, the individual first experiences headache, confusion, giddiness, nausea, and some loss of muscle power. The characteristic smell of bitter almonds may be noticed at the mouth and in the breath. There may be violent convulsions before the patient loses consciousness and dies. A small quantity of fine froth may appear at the mouth. Following ingestion of the cyanide salts, the symptoms appear after about 10 to 20 minutes, as it has to be acted upon by HCl of the gastric juice to liberate hydrocyanic acid. ठीक है, अगर सॉल्ट के फॉर्म में दिया है जिसके अंदर लाइक इट्स सॉल्ट ऑफ साइनाइड, ठीक है, तो फिर उसमें 10 to 20 मिनट लग सकते हैं. So it is in 3 forms. Gas में instantaneous death, liquid में after 1 minute, and if it's a salt तो 10 to 20 minutes लग सकते हैं. But in any case death हो जाएगी within half an hour. ठीक है. So cyanide के salts में symptoms appear after about 10 to 20 minutes, as it has to be acted upon by HCl of the gastric juice to liberate hydrocyanic acid. Okay. तो HCl को ज़्यादा टाइम लगता है सॉल्ट के अंदर से हाइड्रोसाइनिक एसिड बनाने के लिए, इसलिए सॉल्ट में ज़्यादा टाइम लगेगा. प्रिंसिपल सिम्टम्स इंक्लूड वही dyspnea, dilated and fixed pupils, convulsive seizures, and loss of muscle power. There may be a corrosive effect on the mouth, throat, and stomach with epigastric pain and vomiting. The face is cyanosed, the jaw may be tightly clenched, and froth may be seen at the mouth. The respirations are spasmodic and pulse imperceptible. Death occurs from respiratory paralysis. Chronic poisoning occurs from repeated exposure to non-lethal doses of hydrocyanic acid or cyanides among photographers. तो फोटोग्राफर्स में होता है, ग्लाइडर्स में अदर होता है, और जो इनकी प्रेपरेशन को हैंडल करते हैं मेटलर्जी वाले या फोटोग्राफर्स उनमें होता है. ठीक है. Such persons suffer from headache, vomiting, diarrhea, chronic ataxia, and mental disturbance. Fatal dose is 50 to 60 milligram of pure acid, 30 drops of pharmacopoeial preparation, 60 drops of crude oil of bitter almonds. जो bitter almonds का crude oil है उसमें भी ये हाइड्रोजन साइनाइड एसिड होता है, तो उसके भी 60 drops are fatal. 200 milligram of potassium cyanide have to fatal. ठीक है. अच्छा, fatal period is immediate to 20 minutes, depends on कि किस फॉर्म में पॉइजनिंग हो रही है. ट्रीटमेंट जो है वो उसमें इतनी वैल्यू नहीं है.
बहुत ही कोई इमीडिएट ट्रीटमेंट दे सकते हैं तो इट मे बी ऑफ वैल्यू, बट बहुत मुश्किल है इसके अंदर बचना. द एम इज टू रिवर्स द साइनाइड साइटोक्रोम कॉम्बिनेशन. ठीक है. This is achieved by converting hemoglobin to methemoglobin so that the cyanide will combine with methemoglobin to form cyan methemoglobin, which is non-toxic. Cyanide can be converted to relatively non-toxic thiocyanate. ठीक है. So अगर बहुत इमीडिएटली ट्रीट कर रहे हैं तो शायद वो बच जाए, शायद. तो अगर ट्रीट कर रहे हैं तो फिर मेट हेमोग्लोबिन से करेंगे. ठीक है. तो मेट हेमोग्लोबिन देंगे या फिर उसको ट्राइकोबॉल्ट टेट्रासीमेट देंगे. ट्रीटमेंट इंक्लूड्स 220 ml ampules of tricobalt tetrasimate से किलो साइनोड कहते हैं. ठीक है. They are injected intravenously followed by 20 ml of 50% glucose या फिर IV administration of methylene blue, uh, which is methylcunine, may also be used as an antidote. It converts hemoglobin to methemoglobin, which combines with free cyanide therapy, removing it from the reaction. ये यूजुअली आप कर सकते हो अगर उसने कोई सॉल्ट लिया है साइनाइड का और आपका थोड़ा टाइम है विद गैस एंड लिक्विड, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो बच जाए. ठीक है. तो अगर सॉल्ट खाया है और टाइम है और इधर वीडियो ट्रीटमेंट हो सकती है तो फिर आप ये चीज़ें देंगे कीरोसाइनोल and methemoglobin so that hemoglobin is converted to methemoglobin, which combines with free cyanide therapy, removing it from the reaction. ठीक है. Hydroxycobalamin 50 milligram per kg in commercial solution. This is another option as an IV infusion. It works by combining with cyanide and forming cyanocobalamin, which is excreted in urine. Cyanide को utilize करने के लिए different वो है treatments which we can try. One is tiroseinol, one is methylcunine chloride. Poisoning, the stomach should be lavaged with a 5 to 10% solution of sodium thiosulfate or a mixture of sulfates of iron, followed by a solution of potassium carbonate to form Prussian blue, which is inert. Emetics may be used if a stomach tube is not readily available. Okay. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे सकते हैं, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम थायोसल्फेट दे सकते हैं. पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस सब पे आ जाते हैं. एक्सटर्नली वही बिटर आमंड्स की स्मेल आ रही होगी बॉडी में. उसके पूरा फेस, लिप्स, बॉडी सर्फेसेस में इरेगुलर पिंक पैचेस होंगे. स्किन इज लिविड और साइनोस, नेल्स ब्लू होंगे. दे मे बी फाइन फ्रॉथ एट द माउथ. The eyes may be bright, glistening, prominent with dilated pupils. Postmortem staining pink होती है cyanide poisoning में. Rigor mortis sets in early if there have been convulsions. Internally भी bitter almonds की smell आ रही होगी. Stomach में, CS cavities में, brain में, mucous membrane of the stomach may be pink, and other organs together with blood are usually of the same shade because of the impeded oxygenation of the tissues by the cyanide and the postmortem formation of cyan hemoglobin. ठीक है. Um, Blood-stained froth may be found in trachea and bronchi. So blood-stained froth hai, the brain and meninges are hyperemic, and vertical hemorrhages appear in the pleura, pericardium, brain, meninges, lungs. When potassium cyanide has been taken, there may be a slight corrosion of the mouth, reddening of gastric mucosa, brick red, so brown color का gastric mucosa होगा. Remember the color. Okay, brick red, brown color. Stomach may contain frank or altered blood from erosions and hemorrhages in its walls. Um, कि जो brain है, lungs है, blood, stomach contents and urine and vomit should be preserved for chemical analysis, taking care that sample present no hazard to those packing, transporting or unpacking. क्योंकि जो body parts हैं उसमें जो fluid निकल रहे होंगे वो भी hazardous होंगे. Hydrocyanic acid and cyanides are used as suicidal agents, the cyanides being 3 times as common as the acid, owing to their common use in garden and photography. That's why most conditions of ideal suicidal poison they are usually used by those who have made up their mind to commit suicide. Yeah, it's a very good suicidal poison. Some suicide bombers use cyanide to die before they are caught or after their task is over. Accidental poisoning occurs when it is used for fumigation or disinfection. Chemists and lab assistants may be exposed to gas when throwing away cyanide solutions into sinks already containing acid residue. Homicidal is rare because of the peculiar smell and taste of the hydrocyanuric acid. Used for judicial execution in some countries.
अच्छा, digitalis is a poisonous plant और ये glycoside drug है, it acts directly on the heart muscle. It is used to improve the function of a failing heart. लेकिन इसकी जो overdose है, it is poisonous, ठीक है. और जो foxglove plant है, उससे ये उसको extract करते हैं उस in the form of digitoxin, digitalin or digitalin. And digitoxin are most poisonous and they have a cumulative action. Symptoms and signs. Toxic symptoms by overdosage or more insidious cumulative action are indicated by malaise, loss of appetite, nausea, vomiting, abdominal discomfort, diarrhea, headache, giddiness, confusion, delirium, pale cold extremities and hypertension. Toxic effects on the heart are bradycardia, heart block, ventricular coupling, expresses relief, relation, faintness, precordial oppression. बेसिकली ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को डिस्ट्रॉय कर देता है, आपको पता होगा, जिसकी वजह से ये सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स होंगे, ठीक है. फेटल डोज 15 to 30 milligram डिजिटलिन और 4 milligram डिटॉक्सिन है और फेटल पीरियड वेरीज फ्रॉम हाफ आवर टू 24 आवर्स. ट्रीटमेंट है उसके, आप उसको वार्म रखें, रेस्ट दें उसको, एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं 50 to 100 ग्राम. स्टमक वॉश, वो भी स्टमक वॉश तभी करते हैं अगर वो इमीडिएट ओवरडोज भी हो, ठीक है. Less than 4 hours have passed. One after activated charcoal 50 to 100 grams. Evacuate the bowels by saline purgative and enema. Cardiac rhythm must be monitored continuously. Bradycardia, um, ventricular ectopic beat and AV block are often reduced or abolished by injection of atropine 0.6 to 1.2 milligram. ठीक है, तो आप उसको atropine लगा सकते हैं. Ventricular tachycardia may occur in acute poisoning and are best treated with lignocaine or pranolol. So acute poisoning में ventricular tachycardia होता है, वैसे bradycardia होता है और इसका क्लियर नहीं है कि ऐसा क्यों होता है. Plasma potassium in urea should be measured. Hyperkalemia of over 6 millimole per liter should be treated by giving 25% glucose ID and insulin 10 units. ठीक है, so ये है. Hyperkalemia in severe cases occur because the membrane ATPase is inhibited with resulting increase in sodium concentration and leakage of potassium from the cells. ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो है वो इनहिबिट हो गया है, तो हाइपरकैलेमिया होगा severe cases में with resulting increase in sodium concentration and leakage of potassium from the cells. Increased potassium in serum impairs the heart excitability. For hyperkalemia, give 15 to 30 grams risonium orally or per rectum and repeat as necessary. For severe cases, hemodialysis may be necessary. If available, anti-glycoside antibodies be given. It is the most promising treatment, but unfortunately, it is widely not available and is very expensive. If the patient survives for 24 hours, recovery is usual. Postmortem appearances are not characteristic. There may be irritation of the gastric mucosa and digitalis leaves or seeds or medicine may be found in the stomach. Okay. तो इतनी कैरेक्टरिस्टिक postmortem appearances नहीं होती. Medical legal aspect में poisoning is mainly accidental or by overdosage. ये भी rare specific poison है. Pharmaceutical poisoning is recorded. Digitalis is rarely used with ulterior motive to stimulate heart disease. तो ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी सारा कुछ और आप प्लीज गो थ्रू इट. ये सारे चारों क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू और आपको कोई क्वेश्चन है वो मुझे व्हाट्सएप पर भेज दें. Yeah. So only one of them was 8 थी जिसकी residue है और बाकी accidental है, which was cyanide. So it's a very good residual poison. हाइड्रोसाइनिक एसिड को जुडिशियल एग्जीक्यूशन के लिए यूज करते हैं.
toxicity को diagnose कर सकते हैं ECG से, bradycardia, heart block, ventricular coupling, inhibition is common, faintness, deep body depression, respiration becomes slow and sighing, vision disturbances, the patient becomes drowsy, the condition may promote to coma, convulsions may precede death.